हेम्प, भांग या गांजा, ये सारा जो कंफ्यूजन है आपको हमारे लिए, हमारे जो गेस्ट है आज के, आपके लिए सारा दूर कर लेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य बना 6 साल बाद इंडस्ट्रियल हेम्प लाइसेंस मिलने के बावजूद भी आज पहली बार वो लोग परमिसिबल लिमिट में इंडस्ट्रियल पर्पसेस और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हेम्प उगा पाएंगे। ऐसे ही एक शख्स और एक व्यक्ति है बॉम्बे हेम्प कंपनी के, जो आज हमारे चैनल के साथ मौजूद है। सो टू ब्रिंग more clarity for our viewers, I am joined by Delzaad Deolaliwala, who is the Chief Legal Officer at the Bombay Hemp Company, funded by Mr. Ratan Tata. Let us try and understand what this concept of hemp is and what this massive victory that they have been talking about comes for them, and what it really means after a span of 6 years of constant struggles and failures. Thank you, Delzaad, firstly for speaking to us. I just want to try and understand, why is it such a big occasion at the Bombay Hemp Company and for several other stakeholders in the hemp industry and association? What exactly happened in Uttarakhand? Right. So the policy of industrial hemp was made in 2016 by the state government of Uttarakhand. Primarily, the excise department was the one who formulated the policy. The most important thing over here is that there's a permissible limit of 0.3% THC when it comes to industrial hemp cultivation. And there are two main uses of the plant: the fiber and the seed. Is what the main uses of the industrial hemp crop is. So when we made the policy, the most important thing was to also do a lot of scientific research on the policy regarding what kind of seeds can be used, what kind of institutes can be enabled to use those seeds. So we started working most importantly with the state government of Uttarakhand, where GB Pan Institute was the main primary institute that we are working with for doing a lot of understanding on how genetics of hemp grows in that state, and also CSR NBRI, National Botanical Research Institute, Lucknow, where the main body to understand the full germplasm, the full application of hemp. So when it came to that important aspect, Uttarakhand gave us the right opportunity, the right platform to get a license for the first time in the country to allow us to grow industrial hemp and use it for these two main purposes, where a scientific research was important, and that's what we have done since 2016 with CSR, NBRI and GB Pan Institute to get the right seeds, to get the right application of industrial hemp in the country. जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ द वर्क दैट यू गाइज हैव बीन डूइंग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एज दे से कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ बाधा डाल रही है या अड़चन डाल रही है, right. तो उत्तराखंड तो सपोर्टिव रहा ही रहा, लेकिन दूसरे सब गवर्नमेंट एजेंसीज जब उनको आप हेम्प के बारे में या ये वंडर क्रॉप के बारे में बताते थे, व्हाट हैज़ बीन देयर रिस्पॉन्स लार्जली? हैव यू ऑल बीन लुक्ड एट अ लॉट ऑफ सस्पिशन सेइंग दैट these guys are growing ganja? Right. So state by state it's also different. Very importantly, Uttarakhand क्योंकि स्टार्टिंग से वो भांग, उसकी चटनी, उसके यूजेज के ऊपर हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रखते थे. पीपल यूज टू ग्रो इट फॉर फाइबर, अपने इंडिजिनस पर्पस के लिए फाइबर से अपने कपड़े बनाते थे, गनी बैग्स बनाते थे. तो उत्तराखंड में ईजियर वे टू नरेशन होता था, टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट होता था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई वी सिलेक्टेड उत्तराखंड. दैट्स वाई वी स्टार्टेड वर्किंग विद दैट स्टेट डिपार्टमेंट. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जैसे कैप इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट हुए या जीबी पंत हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखाया ये सब चीज़ों में, जहाँ पे आर मेन पर्पस बिकेम साइंटिफिक फर्स्ट एंड देन द कमर्शियल साइड ऑफ इट थिंग. सो व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द पॉलिसी, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द कल्टिवेशन, दीज टू डिपार्टमेंट्स, द साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ agriculture and CAP horticulture became very important, and the excise department very importantly became the guiding force of creating the right policy for the state to implement. So when these two met and jab Uttarakhand became the right kind of I would say platform for industries like us to come together, I would say that is where we started believing that what we have done since 2013 has finally come to a stage we can showcase the benefits of hemp and educate the people about it, where our main motto is educate, cultivate, elevate. We started educating the departments. We started making sure that cultivation happens in the right manner. And once you do the both activities right, then of course elevation of the right kind of customer feedback, product developments, all those things also started happening. So that was I would say a mixing and a melting pot of all these scientific studies and industries coming together. फिर से एक और अहम सवाल, what is hemp, Delzaad?
So hemp is basically defined in the industrial hemp definition, also in the NDPS Act, as anything to do with the right kind of fiber and the seed purposes, जहाँ पे हम specifically 0.3% THC की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उसको seed को food और cosmetic के लिए use करते हैं, fiber को textile के लिए use करते हैं, and that is what is defined under the NDPS also, where the seed has been exempted, the leaves has been exempted, and only the cannabis flower and the bud is regulated by NDPS Act. So that is the main difference between a cannabis, medical cannabis, what is the the world knowing as, and also what is industrial hemp in a defined 0.3% THC manner. ये जो लोग इतना कहते हैं दैट इट इज़ गोइंग टू बी हैविंग एन इंडस्ट्रियल यूज, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दैट? इसके क्या किस तरह के उपयोग हो सकते हैं इंडस्ट्री में? So हम हमेशा किसी से भी बात करते हैं तो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान. That is what we exactly try to promote, and that is what the industry is building upon. Where roti से basically we can make any kind of a food product, and FSI ने 2021 में उसकी notification भी दिया है where you can use hemp as an ingredient for any kind of a food application. Secondly, for kapda, which is the fiber, where we basically speak about anything to do with the textile part of it. जैसे फाइबर में यान हुआ, फाइबर में टेक्सटाइल्स में फैब्रिक्स हुआ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द textile point of view, which is the resha of the plant. And the third part, which is the stalk of the plant, which is also hemp stalk, is used for basically building purposes or building material purposes, जहाँ पे हम सीमेंट के साथ या कोई भी लाइम के साथ बाइंडिंग करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो रोटी कपड़ा मकान बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लीव्स एंड द फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेडिकल पर्पस, जहाँ पे हम दवाइयाँ बना सकते हैं. वी आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड रिसर्च विद NIA, National Institute of Ayurveda, Tata Memorial Center, where cancer research, where a lot of other pain related research has been done by these two primary institutes. जी वापस फिर से बहुत एक अहम मुद्दा जिसके कारण हम आपसे आज मिल रहे हैं. आपने जैसे कि बताया उत्तराखंड में जिस तरह के रिजल्ट्स मिले और 6 साल आपने भी कुछ कम क्रांति नहीं दिखाई है, तो कंपनी, आपकी कंपनी और इंडस्ट्री के टॉर्च बेरर होने के नाते कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो जाते थे, उम्मीद मर जाती थी कि गवर्नमेंट के साथ डीलिंग में सदियां लग जाएंगे और लाइसेंस तो मिल भी नहीं पाएगा. ऐसी चीज़ जैसे वैसे ही गवर्नमेंट ने ड्रग की कैटेगरी में क्लासिफाई कर चुकी है मानसिक रूप से. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने जब एजुकेट किया, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंडिविजुअल कंपनी, द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ पर्पस टू इट इन एन इंडिविजुअल मैनर. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन also, where we framed an association recently in 2022, where we want to tell the government that it is not only for one company or for one specific industry, it's a group of companies that will come together. So when that unified vision came together, when all those practical industrial applications started looking at as an important thing for the government to understand, that's when the industry started growing. That's when we finally found success in 2022 in April, when we started cultivating with Bageshwar district, with the district magistrate and also with the agriculture department. They gave us a lot of support in making sure that the right kind of farmers work with us, the right kind of licenses have been given, and we gave the genetic support and the right kind of research support to the farmers, and the successful cultivation of first time ever industrial hemp happened in 2022, where we used the plant for fiber and the seeds, and that's what we have done to make sure it's a model which is created to showcase to other members, to other industry partners, and making sure that there's a right kind of application feasibility that we show at commercial level also. So that's what we have done, and we are very successful in doing this as a perfect platform and a stencil for other industry people to look at and follow and work towards. तो डेल्जा, कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू अ गो हेड एंड यू गाइज आर नाउ free to cultivate hemp without any kind of tension or fear or worrying about the enforcement or a crackdown of sorts? Yeah. So first it was morely looked at in a manner of restriction. Now the government is completely open to it, where they are encouraging people to get a license. They are encouraging farmers to cultivate hemp for the right purpose. So the perception has completely changed. The understanding of the government has become more positive, and that's what we have done since so many years, and so many other industries now coming together, where the intention and the purpose of the crop is only for industrial and scientific use. Once that comes as a right kind of understanding of the government, the things completely change. When you remove the bhang and the ganja out of it, and you only talk about औद्योगिक bhang and the industrial hemp side of it, तभी गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि ये हम खाली राइट यूज़ के लिए बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, और उसके जैसे रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं. तभी गवर्नमेंट कन्विंस हुई, तभी जाके उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, और अभी उसको एंकरेज कर रहे हैं फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पॉलिसी, फ्रॉम द रिकमेंडेशंस दैट वी कैन डू फ्रॉम द इंडस्ट्री, ऑल टू द एसोसिएशन ऑल्सो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर. तो अभी जब ये सब फायदे दिखे गवर्नमेंट को,
वो अभी पूरा प्रमोशन स्टेज पे है, वेयर एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एवरी फॉर्म ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट इज प्रमोटिंग दिस इन द राइट पॉसिबल मैनर इन द जी स्टेट। जी डेलजाद, मैं ये मेरे पीछे देख पा रहा हूँ कि हेम्प एज अ वंडर क्रॉप का अहम उद्देश्य रहा है कि सेहत पर ध्यान दे और स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और हेम्प क्रॉप और बॉम्बे हेम्प कंपनी एट लार्ज यहाँ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है। तो इससे क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो हमारे पास दो प्रकार के मेन प्रोडक्ट्स हैं। एक है सीड के डिराइव्ड प्रोडक्ट्स विच इज़ बेसिकली द सीड ऑयल प्रोटीन पाउडर। तो ये हमारे सीड प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोटीन है जो सीड से बना, और ये हेम्प सीड ऑयल है जो ऑल सीड के प्रोडक्ट्स है फ्रॉम उत्तराखंड इटसेल्फ। हमने उसको प्रोक्योर किया है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे हमने उसको मैन्युफैक्चर किया दीज प्रोडक्ट्स। एंड जो और हाँ कैनबिस लीफ से जो भांग के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन ऑयल में आर्थराइटिस पेन का यूज़ होता है, या कोई मसल स्टिफनेस की बात करें, या कोई सही सीरम की बात करें, वो हेयर और एनी काइंड ऑफ अदर स्किन पर्पसेस, वो हम लीव्स यूज़ करते हैं भांग के साथ मेडिकल यूजेस के लिए, क्योंकि वो हमारे आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली विजया के नाम से वी नो अबाउट दिस काइंड ऑफ अ वंडर क्रॉप। सो वी आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, द राइट काइंड ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, जैसे आयुर्वेदा में चतामंसी, तगर, अदर एलोवेरास, all those applications together with the ingredients of bhang is what we are using for making these kind of innovative products, जहाँ पे seed के primary और leaves के primary medical products हम use कर रहे हैं for pain management, for any kind of cancer pain, for any kind of skin issues, topical issues, cosmetic, वो सब हम दोनों प्रकार के products use कर रहे हैं from उत्तराखंड and मध्य प्रदेश when it comes to that। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है, ये जो आपकी अलग अलग रेंज है, मसल स्टिफनेस, रिड्यूसेस क्रैम्प्स, तो ये सब क्या है और आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि आपके साथ कोई डॉक्टर है या जो आपको साइंटिफिकली हर एक चीज़ बता पाए कि इसके क्या उपयोग हो सकते हैं और इसके फ़ायदे किस तरह के हैं? तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा रिसर्च स्पेसिफिक करते हैं, जहाँ पे वी हैव अ रिसर्च प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट टीम ऑल्सो who understand the application first, understand the ingredients of what kind of ingredients going to be effective for what manner. And when we have that kind of a formulation done with the lab and with the the right kind of partners and the individuals that we have in the company and third party expertise like Rosari and other manufacturers, that's when the formulation is created. And also from the market research and study of where exactly cannabis is going to be looked at आयुर्वेदा में हमारे कैनबिस के बारे में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं और मेंशन किए, तो वो टेक्स्ट लेके, वो अंडरस्टैंडिंग लेके वी फॉर्मुलेट प्रोडक्ट्स एंड गो थ्रू अ प्रॉपर स्टेबिलिटी डेटा, गो थ्रू अ प्रॉपर COA डेटा सेंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। वो सब करने के बाद वी गेट टू दिस काइंड ऑफ अ कंक्लूजन कि दिस प्रोडक्ट वुड बी बेस्ट फिटेड फॉर द मार्केट फॉर दीज एप्लीकेशंस। एंड डूइंग ऑल द बैक एंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली कैनबिस शेड्यूल E1 के अंदर आता है, भांग जो बोलते हैं वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में शेड्यूल E1 बोलते हैं, और उसके लिए हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसका सेफ्टी डेटा क्या है, टॉक्सिसिटी डेटा क्या है, और उसी स्टडीज़ के बाद ही हम ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अथॉरिटी पूछ सकती है या कोई पेशेंट पूछ सकता है, वी मेक श्योर दैट दीज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैव बीन डन, एंड देन ओनली दैट साइंटिफिक डेटा प्रमोट्स द प्रोडक्ट एंड स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट इन द मैन। एंड ये सब प्रोडक्ट बहुत ही एफिकेशियस है, customers are really liking it, seeing the benefit, and that is what we believe that in the future also we will make sure the technology, the usage of the product gets varied and also the application increases। जी डेज़र्ट, मेरा आखिरी और बहुत ही अहम सवाल ये रहेगा आपसे, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और आपको पता ही होगा कि कैंसर हर साल कितने लोगों की जानें लेता है, और पूरी तरह टेक्नोलॉजी कहे या साइंस कहे, दोनों ने मिलकर भी कैंसर का कोई हल या तोड़ जिसे हम कहते हैं नहीं निकाला है, लेकिन आप लोग एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट इज द बॉम्बे हेम्प कंपनी डूइंग to make life easier for cancer patients. Right. And also I believe that you guys at the Bombay Hemp Company have tied up with one of the biggest cancer treatment institutes of India. We'd like to know more about that. Sure. So cannabis in that a compound called THC is going to be always looked at as the most important compound when it comes to pain reduction or any kind of inflammation or any kind of soreness. It's been studied upon since many years internationally. India mein Ayurveda is also, it's also mentioned that THC has been used as a component to ease pain or any kind of other form of application. So
The compound is going to be the most effective. Tata Memorial Center is the scientific partner that we have started working with, where they are cancer specialists. They understand what is the the right kind of treatment, what kind of surgery needs to be done. So when we started working with them, we partnered with them. We got a lot of international data, a lot of understanding of THC is going to playing an important role, and very important palliative care. Mein, when last stages of the life, when there's a lot of pain, there's a lot of vomiting, nausea. That's where THC is going to be very effective. So 1985, there's a drug called Marinol, which also was launched, which gave a lot of understanding on how cancer treatments or cancer pain managements can be done from that. So keeping those studies in mind, keeping the Ayurvedic references, keeping the full understanding of how THC works in a compound manner, we worked with this kind of an institute, which is the best in the country, and making sure that we do the right kind of trials, both on form of cannabis flower, the cannabis leaves, and also a lot of other applications of it, and making sure that we have a right scientific study towards it, and the right oncologists and the right doctors will be looking forward to make sure that the study is then used into patients, specifically cancer, HIV, and other kind of pain related management patients. तो कहीं ना कहीं ये आज के लिए, आज की स्थिति आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पहले गवर्नमेंट इंटरप्शन और इंटरफियरेंस था, आज गवर्नमेंट सपोर्ट एंड असिस्टेंस है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत टाइम हो गया था, 10 साल हो गए, जहाँ पे हमने एवरी डे अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट, वर्किंग टू एंड फ्रो, गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग इन द स्टार्ट कि भांग कर रहे हो, गांजा कर रहे हो, काइंड ऑफ अ थिंग। बट द परसेप्शन चेंज, द एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द अवेयरनेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ टुडे द इंडस्ट्री इज अ स्टेज वेयर देयर आर so many other companies working towards the same objective. It's a unified vision, it's a unified form of pathway that we are all coming together. The associations are there, and that is where we believe that the perception of the government is very positive. The states have empowered to use this cannabis crop for cultivation or any kind of other usage. The state departments of Uttarakhand, Himachal, even Odisha have become very positive regarding cannabis usage for medical and industrial usage. So it is a very different stage. बहुत ही अलग 10 साल के बाद experience है, where the acceptance is very positive. The promotion of it and the push for the government is more proactive, and that's what we believe that it will continue in the next few years to come, and it will become a proper full-fledged industry to be a part of. There is no sensitivity, there is no other perceptions that has been created. All the stigma and the bad perception has been now cleared out, and we believe it's the best stage for any industry or any partner to work and be a part of this industry now. और 0.3% अचीव करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो आपके खुद के खेत भी है, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू डेलजाद। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.